Hello student, good morning. Class 9 Health and Physical Education. Today chapter is the psychology in sports. Before studying in psychology in sports, we must need understand the definition of psychology. Psychology, according to Crooks and Strain, according to Crooks and Strain, psychology is the scientific behavior and mental process of human and other animals. Again repeated, according to Crooks and Strain, psychology is the scientific behavior. Psychology is the scientific behavior and mental process of human and other animals. मीन्स जो आपके क्रुक्स एंड स्ट्रेन हैं वो ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक बिहेवियर है, एक साइंटिफिक बिहेवियर है और मेंटल प्रोसेस, साइंटिफिक बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस है जिसमें किसी भी मनुष्य और जानवर की देखी जाती है। मीन्स ये साइकोलॉजी एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस है, ऐसा साइंटिफिक बिहेवियर प्रोसेस है जिसमें मनुष्य और जानवर की मेंटल बिहेवियर को देखा जाता है। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ द मेंटल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन। साइकोलॉजी इज द scientific process of mental and physical behavior of any human or animals। मीन्स यह कहा जा सकता है कि एक मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी एक मनोविज्ञान है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत आप जो है किसी भी मनुष्य या जानवर के मेंटल बिहेवियर का एक प्रकार का नियमन है, एक प्रकार का प्रोसेस है। सेकेंड लीडर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, सेकेंड लीडर अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल रिलेशन टू हिज एनवायरमेंट। तो ये आपकी वुडवर्थ हैं। वुडवर्थ ये बोलते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंस, साइकोलॉजी इज द साइंस of activities of individual relation to his environment। मीन्स जो मनुष्य जो होता है वो जो भी एक्शन और रिएक्शन करता है, उस एक्शन और रिएक्शन का एटमॉस्फेयर या वातावरण से क्या क्या उसका रीजन होता है, क्यों करता है। मीन्स इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करता है या वो जो बिहेवियर एक दूसरे से करता है उसका रिलेशन क्या है एनवायरमेंट के साथ, तो उसका साइकोलॉजी में इसका स्टडी किया जा सकता है। अब सेकंड थिंग्स जो आपकी आती है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जो डेफिनेशन इन्होंने दिया है, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जो लीडर है, फिजिकल लीडर जो है जॉन डी लैथर, जॉन डी लैथर जो बोलते हैं वो कहते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज एन एरिया विच अटेम्प्ट्स टू अप्लाई साइकोलॉजिकल फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग परफॉर्मेंस एंड एसोसिएटेड ह्यूमन बिहेवियर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अगेन रिपीटेड, according to John D. Lathan, sports psychology is an area which attempts to apply psychological facts and principles of learning performance and associated human behavior in the field of sports। तो ये कहते हैं कि जो आपका स्पोर्ट्स के एरिया में जो है उसका जो प्रिंसिपल्स है, उसका जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है, जो कि आपकी लर्निंग प्रिंसिपल्स है, जो सीखने का सिद्धांत है, वो परफॉर्मेंस एसोसिएटेड है वो ह्यूमन बिहेवियर से, ऐसा जॉन डी लैथर का कहना है। ब्राउन एंड मैथोनी, अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड मैथोनी, sports psychology is the application of psychological principles
to sports and physical activities at all levels of skill improvement. अब जो आपके ब्राउन एंड मैंथोनी हैं, ब्राउन एंड मैंथोनी ने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को बताया है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मीन्स स्किल्स डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल प्लेयर रिलेटेड टू हिज मेंटल एंड फिजिकल एटीट्यूड एंड बिहेवियर। मीन्स आपका जो एटीट्यूड है, मीन्स आपका जो किसी भी एक्टिविटी को जो स्किल्स को डेवलप करते हो, उसका आपका जो मेंटल एटीट्यूड उसके अकॉर्डिंग है, उसका जो आप स्टडी करते हो वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, स्किल डेवलपमेंट कैसे करते हो वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जो सेकेंड पॉइंट है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का बड़े इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स। ये साइकोलॉजी का स्पोर्ट्स में या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब आप इंपॉर्टेंस क्या है इनका, इस इंपॉर्टेंस को आप स्टडी करोगे तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो देयर आर मेनी इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी is that sub-discipline of psychology that deals with the all situations and behavior changes that arises before, during the after sports competitions or sports training sessions. The main aims of sports psychology is to the study and understand the behavior of athletes, altered after them according to the circumstances, and hone the skills of sportsmen in order to improve their performance. Psychology plays an important role in physical education or health and physical education and sports, as the progress in these fields cannot occur without proper knowledge and understanding of growth and development, heredity and environment, distinctive differences, interests, attitudes, emotion, behavior of an individual. Due to increasing competition in the field of sports, the psychological problems of sports persons like stress, anxiety, etc. have become all are mainly serious and complex. Consequently, sports psychology has become all more important in order to improve behavior so as to achieve better performance. Psychology is important in physical health and physical education and sports because of the following reasons. Number one, it helps in improving performance. But it helps in improving performance. ठीक है। अब फर्स्ट जो आपका है वो इट हेल्प्स द इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। जो साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी टू इम्प्रूव द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। एनी स्पोर्ट्स पर्सन डू परफॉर्म स्किल्स better to better. How can possible means help the sports psychology to increase the better performance of any sports person or athletes. Clear it? Second point is the it removes psychological barriers. Removes the psychological barriers means sports psychology plays a vital role in the removal of psychological barriers such as stress and tensions, as well as reduction of emotions such as anger, fear, envy,
The removal of psychological barriers promotes closer relationship between team and other other members and helps in their better team performance. Sports persons and team are generally accompanied by psychologists to help them members relax and motivate them to win the competitions. The services of psychologists are required before, during, and also after the matches. इमेज जो सेकंड टॉपिक है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। आप किस फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा टारगेट होता है जो कि आपके टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के रिगार्डिंग वो ठीक अपोजिट होता है। Means suppose that you are a cricketer, you are a footballer, you are a हॉकी प्लेयर। किसी भी सिचुएशन में यदि आपकी अपोजिट सिचुएशन है, अपोनेंट टीम आपकी बहुत स्ट्रांग है, क्रिकेट में आपको मैक्सिमम रन्स हैं, मिनिमम बॉल्स हैं, आपको उस रन्स को क्लियरिफाई करना है, उस रन्स को टारगेट करनी है। या फुटबॉलर हो तो आपको फुटबॉल में क्या है, मैक्सिमम गोल्स हैं आपको अपोनेंट टीम की आपके खिलाफ, आपको आपके अगेंस्ट, और आपके पास टाइम भी कम है, आपको मैक्सिमम गोल्स को कवर करनी है, टारगेट करनी है, हिट करनी है। तो उस कंडीशन में भी जो आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, आपकी जो एंजाइटी होती है, आपकी जो इमोशंस होती हैं, आपकी जो विलिंग पावर होती है, उसको आपको इंक्रीज करने में, डेवलप करने में, उस टारगेट को इजी टू इजी अचीव करने में आपको हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट जो आपका ये है, थर्ड पॉइंट है आपका, इट हेल्प्स टू लर्न न्यू टेक्निक्स एंड स्टाइल। Nowadays there is an extreme competition in the field of sports, and many new techniques and style are being implemented to gain competitive advantage. Sports psychology helps in learning new techniques, method, and style. In fact, what we think to be very difficult can be made easy by applying the principles of sports psychology. आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, आपको जो न्यू टेक्निक है, न्यू स्टाइल्स हैं, आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, न्यू इक्विपमेंट्स हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग कैसे आपको उसको अपनी अकॉर्डिंग अपने फेवर में कैसे करोगे आप, उस स्टाइल को, उस टेक्निक को कैसे हैंडल करोगे आप, इसमें भी आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प करती है। क्लियर इट? And next point is it enhance motor skills. Motor skills is very important skills in your any athlete. Motor skills is very important skills in any sports person. Doesn't matter is which field correlate that sports person. Doesn't matter is he or she is a cricketer, he or she is a footballer, he or she is a basketballer, he or she is a marathon racer, he or she is a short distance racer, he or she is a middle distance racer. Doesn't matter. Doesn't matter. आपको क्या है, आपको अपने टारगेट को हिट करना है। हाउ कैन हिट द टारगेट, ये आपको मोटर स्किल्स, आपको स्किल्स जो आपके सेकेंडरी स्किल्स हैं, जो आपकी सेकेंडरी स्किल्स क्या होती हैं, आपकी मेन स्किल्स क्या है, आपकी स्पीड हो गई, स्टेमिना हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, एंडोरेंस हो गया, पावर एजिलिटी हो गई, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी हो गई। तो ये तो आपके क्या है, सेकेंडरी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी एलिमेंट्स हैं उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आपकी हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, it helps in planning training program. Last point is very important point. Last point is very important point according to sports psychology.
how can decide the training program? If that your training program is going on well and tough condition, well and tough sessions, you practice it well and honestly, means your willpower is going on reserve position, and that's your you hit the target, you achieve the target. Okay, that's all. Next point. Next point. Next point is a definition, define and differentiate between growth and development. Growth and development topic. Next day. That's all. Good day. Have a nice day.